That is chapter 4, The Naughty Boy, page number 17. So all of you take out your book. I'm going to read the chapter, okay? So listen it carefully. Once upon a time there was an boy called Raman who lived in a village. एक बार का बात है, एक बॉय था, एक लड़का था जिसका नाम था रमन और वो कहाँ रहता था? एक विलेज में रहता था. ओके, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बॉय? रमन. Okay, and he lived in a village. He looked after his father's sheep. जो उसके फादर के sheep थे, भेड़, उसको कौन देखता था? रमन ही देखता था. ठीक है. He took the flock of sheep up the hill every day. There the sheep would graze on the green grass. So you can see in the pictures that there are 3 sheep. Okay, flock means a group. He took always a group of sheep to the hill. ठीक है, वो पूरे sheep को, एक group of sheep को वो पहाड़ों पे लेके जाता था. क्यों लेके जाता था? Why? Because there the sheep would graze on the green grass. वो पहाड़ों पे लेके जाता था तो वहाँ पे ये sheep जो हैं green grasses, fresh grasses, green leaves खाते थे ताकि लोग ग्रेस कर पाए, इसीलिए उसको लेके जाता था. One day Raman got bored. He wanted to have fun. He ran down the hill crying, "Wolf, wolf, wolf." एक दिन क्या होता है? रमन बहुत ही बोर हो जाता है. So he wanted some fun. What he done? ये क्या करता है थोड़ा फन के लिए? He ran down the hill crying, "Wolf, wolf, wolf." वो हिल से, पहाड़ों से दौड़ता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ क्या बोलता है? Wolf, wolf, wolf. भेड़िया जिसको बोलते हैं. ठीक है, चिल्लाता है. The villagers heard Raman's cry. They rushed out of their houses and ran up the hill. As soon as he cried, he shouted. The villagers, all of the villagers came out from their houses. ठीक है, लोग सब क्या रमन का आवाज सुन के अपने अपने घर से भाग दौड़ के निकलते हैं कि क्या हुआ. They met Raman and asked. Okay, और सारे विलेजर्स वहां पहुंचते हैं और रमन से पूछते हैं क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? Where the wolf was? वो लोग पूछते हैं कहाँ है वॉल्फ? Raman laughed at them because there was no wolf. Okay, when the villager asked Raman where the wolf was, he laughed. Why? Because he knew there was no wolf, so he was laughing at them. Okay, वो उन लोग पे हंसता और बोलता है because वहां तो कोई है ही नहीं. ठीक है, वॉल्फ है ही नहीं. The next day he played the same game again. Wolf, wolf, wolf. He cried, running out down the hill. दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वो यही काम करता है. फिर हिल से भागते हुए, चिल्लाते हुए वॉल्फ वॉल्फ करता है. ठीक है, रोते हुए भागता है. Once again the villagers came to help. They realized they had been fooled once more by the naughty boy. ठीक है, so once more the villagers came out from their houses. वो लोग फिर से villagers जो सुनते हैं इसका आवाज सब अपने घर से बाहर निकलते हैं. फिर उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग फिर से बेवकूफ बन गए, ये तो मजाक कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट पेज. A few days later a wolf really came there and attacked the boy. He started shouting at the top of his voice, "Wolf, wolf," but the villagers thought that he was trying to befool them once again. और कुछ दिनों के बाद क्या होता है? सच में वॉल्फ आ जाता है. This is a picture of wolf you can see, and he really came there and attacked the boy. ठीक है, वो लोग अटैक कर देते हैं. And then he shouted at the top of his voice. He was shouting like anything. He was shouting wolf, wolf, wolf. But this time no one came there to help him. Why? But the villagers thought he was trying to fool. उन लोगों को लगता है कि ये तो फिर से बेवकूफ बना रहा है, हम क्यों जाएं? तो कोई नहीं आता है उसे बचाने के लिए. ठीक है, they did not come to help him. The wolf carried away 3 of Raman's father's sheep. He thought sadly, "I wish I had not played that silly game." You can see the wolf attacked all 3 sheep. उसके फादर के जितने sheep थे सबको वो खा जाता है. ठीक है, या ले जाता है
और बाद में इसको पछतावा होता है. After that he realized that I should not have done this mistake. I would not have played this silly game. मुझे ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए थे. उसे बाद में एहसास होता है. ठीक है. So this was the chapter. और क्या होता है, and these are the valuable